Hello everyone, welcome to Nursing with Priya, and in today's lecture, we will study about the cell structure. Cell is the basic building block of the human organism. For example, the buildings are made up of the bricks, and bricks are the smallest unit of the building. Similarly, the human body is made up of cells. Cell is basic structural and functional unit of all the living organisms. Structural means that it provides shape to the body, whereas the functional unit means that all the functions that are carried out in the body, for example, respiration, absorption, conduction, etc., they are all performed by the cells. Cell was discovered by the scientist Robert Hooke in the year 1665. He observed a thin slice of cork under a microscope and observed that there are tiny structures present which resembles the small different rooms. So he named the cell from a Latin word which is cellula, which means the small rooms. And cells are not visible with the naked eyes. You can only observe or see them in the microscope. In nursing, it is important to study about cell because all the disease, all the drugs and the treatments, they all work at cellular level. Everything is carried out at cellular level. In the human body, there are about 100 trillion cells present, and different cells perform a specialized function. Each cell is assigned with the special task. For example, RBCs transport oxygen, muscle cells they do contraction and movement, neuron cells conduct the impulses, and intestinal cells absorb the nutrients from the food. We have seen that the definition of cell, there are two main types of cells, prokaryotic cells and eukaryotic cells. Eukaryotic cell is found in human beings. This is larger and complex in the structure, and it has nucleus and cell membrane bound organelles present in it, whereas the prokaryotic cell are simpler and smaller in structure, and they do not have any nucleus present or any cell organelles present in it. For example, in bacteria, every cell can have different size. For example, RBCs have about 7 to 8 micrometer size. The human egg cell, which is ovum, has uh, about 100 micrometer size, and the bacteria is of 1 to 5 micrometers in size. So key features of cell are that it is structural and functional unit of life. They are self-replicating, which means they can divide themselves to form the new cells, and they are the basic unit of life. What is the importance of cell in human body? Because they are the building block of the living organisms. They carry out essential functions, and they enable the growth, repair, and reproduction in the human body, as well as they maintain the balance and homeostasis in the body. And now, as we have already discussed about the cell, we will dive into the cell membrane. Cell membrane is nothing but a protective layer surrounding the cell. This is the cell membrane, as you can see here. This is the outer layer of the cell which protects the cell. Cell membrane is also known as plasma membrane, and the cell membrane is selectively permeable. It is selectively permeable. Selectively permeable means that it allows some substances to pass, whereas blocks the other substances. The fluid mosaic model is the most accepted model of the cell membrane, of the structure of the cell membrane. It says that it is made up of phospholipid bilayer and floating proteins. The first structure of the cell membrane is phospholipid bilayer. The phospholipid bilayer means that there are two layers. यहाँ पे देखो. This is the first layer of the phospholipids, and this is the second layer of the phospholipids. So bilayer means that there are two layers present in the cell structure. Now the phospholipid head is hydrophilic, which means it is water loving, whereas the tail is
hydrophobic, which means it does not like water. It hates the water and it repels the water. The head is facing towards the outward, whereas the tails are facing towards the inward. Fine. The second structure is membrane proteins. There are two types of proteins present. First one is peripheral protein, the second one is integral protein. The peripheral proteins are present on the surface of the सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, वो सिर्फ सरफेस पे मिलेंगे. दे आर नॉट फुल्ली एम्बेडेड इन दी सेल मेम्ब्रेन, वेर एज द इंटीग्रल प्रोटीन्स जो है वो थ्रू आउट दी सेल मेम्ब्रेन जो है वो मिलेंगे. इंटायर बाइलेयर में जो है वो प्रेजेंट है. दे आर ऑल्सो नोन एज ट्रांस मेम्ब्रेन. फाइन. जो पेरिफेरल प्रोटीन्स जो हैं दे एक्ट एज द एंजाइम and the integral proteins, they form a channel and pump the substances for moving the ions or molecules. The third structure is cholesterol. Cholesterol are tucked between the hydrophobic fatty acid tails. These are the hydrophobic tails. Hydrophobic मैंने बताया था. Hydrophobic means they do not like water, they hate the water. एंड इनके बीच में जो है कोलेस्ट्रॉल हमें मिल जाएंगे. ठीक है. कोलेस्ट्रॉल का काम क्या है? दैट इन वार्म टेम्परेचर्स they restrain the lipid movement to prevent the membrane from disintegrating. Fine. In cold temperatures they prevent the tight packing to keep the membrane from freezing solid. Solid ना हो जाए उसको प्रिवेंट करने के लिए जो टाइट पैकिंग है उसको प्रिवेंट करता है कोल्ड टेम्परेचर्स में. वेरेज वार्म टेम्परेचर्स में जो है वो लिपिड का मूवमेंट जो है वो प्रिवेंट करता है ताकि सेल जो है वो डिजनरेट ना हो जाए. फाइन. लास्ट वन इज कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स भी जो है वो दो टाइप के हैं, ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स. ग्लाइकोलिपिड्स आर बाउंड टू लिपिड्स whereas glycoproteins are bound to proteins. They are found exclusively on the outer और एक्स्ट्रा सेल्यूलर सरफेस. एक्स्ट्रा सेल्यूलर मतलब सेल के अंदर जो भी चीज़ें हैं दैट इज़ इंट्रा सेल्यूलर. सेल के बाहर जो चीज़ें हैं दैट इज़ एक्स्ट्रा सेल्यूलर. फाइन. So this carbohydrates are found on the outer surface or extracellular surface. इनका काम फंक्शन क्या है? That it forms the glycocalyx. Glycocalyx is the cellular fingerprint which is crucial for cell to cell recognition and allows the immune system to distinguish between the self cell and non self cells. कौन से फॉरेन सेल्स हैं और कौन से अपने बॉडी के खुद के सेल्स हैं उनके बीच में डिस्टिंग्विश करने के लिए ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो फॉर्म होता है विच इज फॉर्म्ड बाय दिस कार्बोहाइड्रेट्स. फाइन. फंक्शन क्या है सेल मेम्ब्रेन का? प्रोटेक्शन, द रेगुलेशन ऑफ मूवमेंट्स ऑफ द सब्सटेंसेस इन एंड आउट, कम्युनिकेशन with the help of receptors and recognition of the cells and interact with them. ये जो है फंक्शन है ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन हमने देखा कि सिलेक्टिवली परमिएबल है. तो क्या क्या सेल मेम्ब्रेन को ईजिली क्रॉस कर सकता है? इज द स्मॉल मॉलिक्यूल्स, लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स एंड वाटर. ठीक है, इन स्मॉल अमाउंट. वेर एज ऐसे सब्सटेंसेस जो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए हेल्प चाहिए आर लार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स. फाइन. द आयन सच एज सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड द अदर molecules which are larger in size. ठीक है. Now that we have already studied about the cell membrane, now we will study about the cell organelles. Cell membrane हमने देखा कि outer layer है. ठीक है. अभी सेल के अंदर जो भी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं दे आर नॉन एज ऑर्गेनेल्स. एंड यही वो स्ट्रक्चर्स हैं जो साथ में काम करके keeps a cell alive and functioning. ठीक है. They are the tiny structures with big functions. The first one is nucleus. Nucleus is the center of the cell. It stores the DNA and controls the gene expression and regulates the cell activity. जितने भी सेल की एक्टिविटी है वो न्यूक्लियस के थ्रू होती है. न्यूक्लियस के अंदर ही जो है डीएनए स्टोर होता है. ठीक है. और जीन एक्सप्रेशंस जो है वो यही न्यूक्लियस कंट्रोल करता है. फाइन. न्यूक्लियस के अंदर ये जो राउंड स्ट्रक्चर है दैट इज न्यूक्लियोलस. फाइन. Nucleolus is inside the nucleus. It produces the RNA and assembles the ribosomal
subunits. Third structure is ribosomes. Ribosomes are the tiny protein factories. ठीक है. Ribosomes can be बाउंडेड राइबोसोम्स और फ्रीली फाउंड राइबोसोम्स. ठीक है, या तो वो साइटोप्लाज्म में फ्रीली मिलेंगे या फिर जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके साथ अटैच्ड मिलेंगे. ठीक है, और ये प्रोटीन जो है उसको सिंथेसाइज करते हैं. द फोर्थ स्ट्रक्चर इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो दो टाइप का है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसके साथ जो है राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं. ठीक है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है? टू सिंथेसाइज एंड फोल्ड द प्रोटीन्स एंड सेंड प्रोटीन्स टू द अदर पार्ट ऑफ द सेल. Whereas smooth endoplasmic reticulum का काम है to synthesize the lipids and detoxify drugs and poisons in the body and store calcium ions. Fine. The sixth structure is glycolic apparatus. Glycolic apparatus जो है they form vesicles and they ship material from one destination to other destination. The next structure is mitochondria. Mitochondria is the powerhouse of the cell. This is the most important organelle of the cell structure. They produce the energy, they are involved in metabolism, and they regulate the cell death. And they are found in the cytoplasm. The eighth one is lysosomes. Lysosomes are the cell's digestive system. They contain the digestive enzyme. They break down the waste and old organelles and pathogens. Ninth one is peroxisomes. Peroxisomes are the detoxification experts. They break down the fatty acids and detoxify the harmful substances. Next is vacuoles या फिर vesicles. These are the storage and transport sacs. They store the water, they store the nutrients and the waste material. They transport the material within the cell. सेल के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह पे अगर कोई मटेरियल ट्रांसपोर्ट करना है देन दैट वुड बी कैरिड आउट बाय द वैक्यूल्स. दी नेक्स्ट इज साइटोस्केलेटन. साइटोस्केलेटन इज द इंटरनल फ्रेमवर्क. ये जो है वो सेल का शेप मेंटेन करता है, सपोर्ट्स द मूवमेंट एंड हेल्प इन सेल डिवीजन. लास्ट वन इज सेंट्रियोल्स. सेंट्रियोल्स जो हैं दे ऑर्गेनाइज द सेल डिवीजन. दे फॉर्म द स्पिंडल फाइबर्स. ये जो है दिस आर द स्पिंडल फाइबर्स एंड हेल्प्स इन सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स. ह्यूमंस के अंदर जो है वो काफ़ी सारे सेल्स प्रेजेंट हैं एंड दे ऑल वर्क टुगेदर इन हारमोनी एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल, जिससे फंक्शन जो है वो सही से हो सके. ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज हर सेल ऑर्गेनल का एक यूनिक जॉब है एंड दे ऑल वर्क टुगेदर इन कोऑर्डिनेशन टू कीप द सेल एंड ह्यूमन बॉडी अलाइव. फाइन. एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस है, वेस्ट मैनेजमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन है, प्रोटेक्शन है, सेल डिवीजन, सेल ग्रोथ है. दे आर ऑल कैरिड आउट बाय द सेल ऑर्गेनल्स. अगर ये सेल ऑर्गेनल्स नहीं होंगे देन सेल जो है वो भी वर्क नहीं करेगा बिकॉज हर एक सेल ऑर्गेनल जो है इज असाइंड विद डिफरेंट वर्क. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन सेल दैट वी हैव सीन. ये आउटर लेयर है विच इज नॉन एज सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, there are centrioles present, Golgi apparatus, cell membrane, nucleolus, nucleoplasm. nucleoplasm and cytoplasm हमने नहीं पढ़ा. ठीक है, nucleoplasm जो है is the water or fluid which is present inside the nucleus, whereas cytoplasm जो है is the fluid which is present inside the cell. Fine. Now we will discuss about the cell division. We have already discussed about the cell structure. Now we will study about the cell division. Cell division जो है is a process जहाँ पे एक parent cell जो है वो divide होके forms the daughter cells. ठीक है. It is essential for growth, repair, replacement of cell and reproduction. ठीक है, अगर कहीं भी कोई इंजरी है, ठीक है, तो सेल डिवीजन जो है वो काम आएगा. ठीक है, ग्रोथ के लिए, रिप्लेसमेंट ऑफ सेल्स, पुराने सेल्स अगर डीजनरेट हो गए हैं तो उनकी जगह न्यू सेल्स जो है वो
सेल डिवीजन की प्रोसेस से ही आएंगे एंड रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, ठीक है। दो मेन टाइप के सेल डिविजन्स है, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस जो है इट अकर्स इन सोमेटिक सेल डिवीजन, वेयर मियोसिस जो है इज जर्म या फिर सेक्स सेल डिवीजन। सेल साइकिल क्या है, ठीक है। सेल साइकिल इज नथिंग बट अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनाइज्ड इवेंट which occurs in a cell to replicate its DNA and divide to form the two daughter cells, ठीक है। It is essential for growth, repair, development and reproduction, which we have already studied, ठीक है। It occurs in the body cells. They are controlled by the specific genes and proteins. They ensure the accurate DNA and replication and equal distribution. अगर सेल साइकिल जो है वो गलत हो गई देन इट कैन लीड टू डिजीज लाइक कैंसर। कैंसर में यू नो दैट देर इज एन अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेल्स। सेल साइकिल के अंदर जो है चार फेजेस हैं। द फर्स्ट फेज इज G1, द फर्स्ट फेज इज G1 फेज, देर इज S फेज, देर इज G2 फेज एंड देर इज M फेज। द G1 फेज जो है यहाँ पे सेल जो है वो ग्रो हो रहा है, ठीक है। इट परफॉर्म्स द नॉर्मल फंक्शन एंड प्रोड्यूसेस द प्रोटीन एंड सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। इस फेज के अंदर सेल जो है वो सिर्फ ग्रोथ कर रहा है और ऑर्गेनल्स जो है वो प्रोटीन और आरएनए जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। देन द सेकंड फेज इज एस फेज। एस फेज के अंदर जो है वो डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है और ईच क्रोमोसोम जो है वो कॉपी किया जा रहा है, ठीक है। थर्ड फेज इज G2 फेज। G2 फेज जो है इसके अंदर सेल जो है इट ग्रोज मोर, इट प्रिपेयर्स फॉर द डिवीजन एंड चेक्स फॉर द डीएनए रेप्लिकेशन एरर्स, ठीक है। द लास्ट सेल इज एम फेज। दिस इज द मेन फेज जहाँ पे न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होता है एंड फॉलोड बाय द साइटोप्लाज्म डिवीजन एंड फॉर्म्स द टू cells. The outcome is that from one parent cell there are two identical daughter cells. The first one is prophase, second one is metaphase, third one is anaphase, then telophase and then cytokinesis, ठीक है। There are two type of cells divisions that we discussed, mitosis and meiosis. Mitosis जो है is somatic cell division, whereas the meiosis is reduction division. Mitosis results in two identical diploid cells. The chromosome numbers remain same, and in humans the parental cell is 46 and in daughters also the chromosome number is 46, whereas in meiosis it occurs in testes and ovaries. The purpose is to form the gametes, okay. It results in four identical different haploid cells. The number decreases from 2n to n. In daughter cells they contain only 23 chromosomes, whereas the parent cell has 46 chromosomes. It divides and only remains 23 chromosomes, fine. Now the phases of mitosis. The phases of mitosis contain prophase. In prophase, the chromatin condenses into chromosomes and the nuclear membrane disappears. The spindle fibers are formed in the prophase. In metaphase, the chromosomes are aligned at the equator. And in third phase, the in metaphase, the chromosomes are aligned at the equator. In the anaphase, these chromosomes or the centromeres, they split and the sister chromatids are formed. These are the sister chromatids which are formed and they are moved to the opposite directions, one at the north pole and one at the south pole. In telophase, nuclear membrane reforms. Here we saw that the nuclear membrane was disappearing, but in telophase the nuclear membrane reforms and the chromosomes become thin chromatin again. In the cytokinesis, the cytoplasm divides and the two daughter cells are formed. We have seen that cytoplasm is nothing but the fluid inside the cell. The cytoplasm divides and the two daughter cells are formed. In the meiosis, there is a reductional division and equational division. There are two phases of meiosis, meiosis 1 and meiosis 2. In meiosis, the first phase is prophase. In prophase, the homologous chromosomes are paired together and the crossovering occurs and the genetic variation is produced. In the metaphase 1,
The chromosome pairs will align at the equator just like in the metaphase of the mitosis. Now, in anaphase, the chromosomes will separate, the homologous chromosomes will separate, and in telophase 1, two haploid cells would be formed. Now, in equational division, the similar mitosis it is similar to mitosis. In this the two haploid cells which were formed, in that the sister chromatids will be separated, and it will produce four haploid cells which are genetically different from each other and from the parent cell. Fine. Now, why is cell cycle important? Cell cycle is important for the growth because it increases the number of cells. It is important for the repair because it replaces the damaged or worn out cells. It is important for the development because it helps in formation of the new tissues and the organs. It is essential for reproduction in single celled organisms because single celled organisms, they reproduce without the help of any other partner. Fine. The checkpoints are that in G1 phase the cells grow. In S phase the DNA is replicate. In G2 phase the cells grow more and the DNA is being checked for the errors. In mitosis phase the main cell division occurs which has four phases: the prophase, metaphase, telophase and cytokinesis. Fine. The prophase, metaphase, anaphase, telophase, and cytokinesis. These are the five phases in the mitosis. Fine. That's all for today's class.